Hello students, I am hoping you all are safe and fine. Yes, our chapter 3, that is safety and first aid, is going on. This is our third video regarding the same chapter. Yesterday we have done regarding the fire, what are the causes, prevention and firefighting in case of the fire. So our today's topic is first aid. So yes, before going to start with the topic, we should know about the meaning of the first aid. फर्स्ट एड क्या होता है? एक्चुअली वेन एवर एन एक्सीडेंट हैपेंड, कभी भी एक्सीडेंट हो जाए, देन द इंजर्ड पर्सन विल गेट द इमीडिएट मेडिकल हेल्प बिफोर ही और शी इज गोइंग टू द हॉस्पिटल, इज नोन एज फर्स्ट एड. फर्स्ट एड क्या है कि अगर कभी भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि जो सबसे पहले कोई भी हेल्प दी जाती है उस इंजर्ड पर्सन को, मेडिकल हेल्प दी जाती है उस इंजर्ड पर्सन को बिफोर गोइंग टू द हॉस्पिटल, इज नोन एज फर्स्ट एड. हॉस्पिटल में जाके तो वहां की ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन जो उसी टाइम पे ट्रीटमेंट दी जाती है उसको हम फर्स्ट एड बोलते हैं. समटाइम्स द फर्स्ट एड कैन प्रिवेंट द पर्सन टू मूव इनटू द वर्स कंडीशन. वो उसको वर्स कंडीशन में जाने से रोक सकता है. इट कैन सेव अ person from the it can save his life also. Sometimes first aid can save the person's life. So first aid is very important in our daily life. So now we will discuss some of the problems one by one and which kind of first aid we can give in that particular situation. That will also we will discuss one by one. So first case is fracture. Fracture means break in the bone. कि कोई भी बोन टूट गई, इट कैन बी ऑफ हैंड, इट कैन बी ऑफ लेग, कोई भी बोन टूट गई तो उसको हम बोलते हैं फ्रैक्चर. तो विच काइंड ऑफ ट्रीटमेंट वी कैन टेक इमीडिएटली? फ्रैक्चर बोन इज एक्चुअली कॉजिंग वेरी मच पेन. वो बहुत पेन करती है और उसको उस टाइम पे हिलाना नहीं होता. तो यस, फर्स्ट वी हैव टू कीप इन आवर माइंड कि उस पर्टिकुलर पार्ट को हिलाना नहीं है जहां पर भी फ्रैक्चर हो जाए. तो ऐसे तो हम कितनी भी कोशिश करेंगे, थोड़ा बहुत मूवमेंट तो हो ही जाएगा. अगर हैंड में मान लो कोई भी ब्रेकेज हो गया है तो थोड़ा बहुत मूवमेंट तो हो ही जाएगा. सो हाउ कैन वी प्रिवेंट दिस मूवमेंट? सो वी कैन यूज टू काइंड ऑफ थिंग्स, दैट इज स्प्लिंट एंड स्लिंग. अगर हैंड का बोन टूट जाता है तो यस, वी कैन यूज पेपर बोर्ड, वी कैन यूज अ मैगजीन, वी कैन यूज न्यूज पेपर. उसको थोड़ा सा फोल्ड करके मोटा सा हमने कुछ बना लिया तो उसको हमने जहां पर भी फ्रैक्चर हुआ है उसके पास लगा दिया. दिस ब्लैक पार्ट रिप्रेजेंटिंग द कार्डबोर्ड और एनी काइंड ऑफ पेपर, मैगजीन, न्यूज़पेपर, कुछ भी, ये इस तरह का पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, इसको इसके साथ बिल्कुल अच्छे से बांध दिया उस पार्ट ऑफ द हैंड के साथ जहां पर भी फ्रैक्चर हुआ है. उस पर्टिकुलर, जैसे ये हमारे पास मार्कर है, उनको अच्छे से बांध दिया. तो यस, दीज मार्कर्स आर नोन एज स्प्लिंट. ये एक हार्ड सरफेस प्रोवाइड करेंगे जिसकी वजह से वो हैंड का मूवमेंट रुक जाएगा. सो दिस इज स्प्लिंट. लेकिन क्या है कि हैंड तो फिर भी हिल सकता है. तो यस, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको फर्दर हेल्प देते हैं ताकि ये हिले नहीं और ये मूव ना करे. तो उसके लिए हम लोग स्लिंग लगाते हैं नेक के अराउंड. इसको टाई करके नेक के अराउंड एक स्लिंग लगाते हैं, रस्सी लगाते हैं. कोई कपड़ा हो सकता है, कोई किसी तरह का कुछ लंबा सा कुछ टेप हो सकता है, कोई रस्सी हो सकता है जो स्लिंग का काम करते हैं. ठीक है, सो ये स्लिंग जो है ये हैंड के मूवमेंट को बंद कर देगी और जो स्प्लिंट है ये पर्टिकुलर उस फ्रैक्चर्ड पार्ट के अराउंड लगाया जाता है जहां पर भी फ्रैक्चर हुआ होता है. So this is the treatment what we have to take in case of the hand fracture. लेकिन अगर लेग का फ्रैक्चर हुआ है तो हमें स्लिंग की जरूरत नहीं है. We just use this splint. हम क्या लेते हैं, लंबा सारा ये कार्डबोर्ड, ये ब्लैक पार्ट जो है वो कार्डबोर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लू इज द लेग. तो ये पूरी की पूरी लेग है, यहाँ के किसी पार्ट में फ्रैक्चर हो गया है तो ये ये हम कोई भी कार्डबोर्ड या कोई भी लकड़ी का पीस, कोई भी स्ट्रेट रोड, कुछ भी ऐसा ले सकते हैं. उसको बहुत टाइटली हम बाउंड कर देंगे, उसके अराउंड बांध देंगे जहां पर भी फ्रैक्चर हुआ है, ताकि वो जो लेग का पार्ट है जो टूट चुकी है वो हिले नहीं. ठीक है, तो उसके अराउंड मतलब बहुत टाइट से बांध देना है. और इससे क्या है कि जब तक हम हॉस्पिटल पहुंचेंगे तब तक ये लेग को स्ट्रेट रखेगा, उसे और ज्यादा इंजरी होने से बचाएगा.
So this is the first aid which we have to take in case of the fracture. We have to use sling and splint in case of the fracture to stop the movement of the fractured part of the body and to stop the further injury in that particular part. So this is all about for the fracture. So our next topic is sprain. So yes, what do you mean by this sprain? क्या होता है sprain? Actually, whenever a twist has happened in our wrist part or ankle part while moving, while playing, while holding any of the heavier substance, then this is called as sprain. कई बार क्या होता है एकदम से चलते चलते लेग ट्विस्ट कर जाती है, एकदम से कुछ काम करते करते हमारा हैंड में रिस्ट में प्रॉब्लम हो जाती है, एकदम से झटका लग जाता है, हैवी सामान को उठाते उठाते मोड़ आ जाता है, मतलब मुड़ जाता है कुछ हैंड. तो इस पर्टिकुलर चीज को हम बोलते हैं स्प्रेन. So which kind of first aid we can take all of sudden to relieve the pain? क्योंकि उस टाइम पे बहुत एक्सट्रीम पेन होता है, तो हम उस पेन से दूर होने के लिए क्या कर सकते हैं? We can use number of things like first of all we can use ice bags. Ice bags we can purchase it from the market very easily. This contains the ice. तो क्या होता है when we are keeping these ice bags nearby that area where the sprain has happened, then we get a relief from the pain. बहुत ज्यादा पेन से रिलीफ मिलता है. सो दिस इज वेरी गुड फॉर टू गेट रीड ऑफ द पेन. हमें पेन से बचने का बहुत अच्छा तरीका है ये. नेक्स्ट वन इज वी कैन यूज पेन रिलीविंग ऑइंटमेंट्स. Next we can use medicine. We can take the medicines which are painkiller. So yes, by which we can get the pain relieving. हम पेन से रिलीव हो जाते हैं if we are taking these kinds of ointments. हम मेडिसिन ऊपर कोई क्रीम लगा सकते हैं, तो उन सब से हमारे पास क्या है, पेन से we can relieve from the pain. Next one is we can use elastic bandage. इलास्टिक बैंडेज क्या है कि हम उस पार्ट के अराउंड बाउंड कर लेते हैं, उसके अराउंड बांध लेते हैं, सो दैट इट विल स्टॉप द मूवमेंट एंड इट विल स्टॉप द पेन. तो उससे हमें रिलैक्सेशन मिलता है. अगर मूवमेंट जितनी कम होगी उतना ज्यादा हमें रिलैक्सेशन मिलता है. सो दीज काइंड्स ऑफ फर्स्ट एड्स वी कैन टेक इन केस ऑफ द स्प्रेन. नेक्स्ट इज बर्न्स. बर्न्स कैन बी ऑफ एनी टाइप, लाइक माइनर बर्न्स, थोड़ा सा जल जाए, स्फीयर बर्न्स बहुत ज्यादा जल जाए, या केमिकल बर्न्स जब अगर किसी केमिकल की वजह से जल जाए. सो यस, इन केस ऑफ द माइनर बर्न्स व्हाट वी हैव टू डू, अगर थोड़ा सा पार्ट कोई जल गया है तो हमें क्या करना चाहिए? वी इमीडिएटली वॉश द बर्न्ड पार्ट ऑफ द बॉडी इन द रनिंग वाटर. हमें उसे पानी के नीचे लेके जाना चाहिए. देन अप्लाई द एंटीसेप्टिक क्रीम ताकि वो जलन खत्म हो जाए और हमारा पार्ट वो जो है ठीक हो जाए. ठीक है. सो यस, इफ वी आर नॉट हैविंग द एंटीसेप्टिक क्रीम देन वी कैन ऑल्सो यूज अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड वाटर. घर पे जरूरी नहीं है कि हमारे पास एंटीसेप्टिक क्रीम हो ही हो उस टाइम पे, तो फटाफट से बेकिंग सोडा हर किसी के किचन में मिल जाता है, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के उसका पेस्ट बना के फटाफट से बर्न वाले पार्ट पे अप्लाई कर दो तो बर्न ठीक हो जाता है. बट इफ इन केस ऑफ द स्फीयर बर्न्स, स्मॉल बर्न्स में, माइनर बर्न्स में तो वी कैन यूज दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट. बट इन केस ऑफ द स्फीयर बर्न्स व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट इमीडिएटली गो टू द डॉक्टर. बहुत ज्यादा जल गया है तो हम उसका ट्रीटमेंट घर पे नहीं कर सकते हैं, तो इमीडिएटली गो टू द डॉक्टर एंड मीनवाइल वॉश द पार्ट ऑफ जो भी जहां पर भी बर्न हुआ है उसको पानी डालते रहो, ठंडा बिल्कुल एकदम चिल्ड वाटर डालते रहो और हॉस्पिटल में दिखाओ. उसके अलावा क्या है कि अगर बहुत ज्यादा जल गया है देन उस पार्ट पे क्या हो जाता है, ब्लिस्टर्स बन जाते हैं. ब्लिस्टर्स मतलब वो छाले हो जाते हैं. सो यस, डोंट ब्रेक दिस ब्लिस्टर्स. उनको काटने की कोशिश नहीं करनी है, फोड़ने की कोशिश नहीं करनी है, तो ब्लिस्टर्स को नहीं छेड़ना है. ठीक है. वॉश दैट अंडर द वाटर. डॉक्टर को दिखाना है. लेकिन कई बार क्या होता है कि ऑल ऑफ सडन द ब्लिस्टर्स ब्रेक डाउन. अगर वो ब्लिस्टर फट गया है, टूट गया है, देन क्या करना है? वी हैव टू वॉश द ब्लिस्टर विद द एंटीसेप्टिक लिक्विड. एंटीसेप्टिक लिक्विड हमारे पास मार्केट में होते हैं, उससे हमें उसको वॉश करना है उस पार्ट को. एंड देन कवर द पार्ट विद द
एनी काइंड ऑफ क्लोथ, कोई भी कॉटन का क्लोथ लेके हमें उसे कवर कर लेना है, सो दैट वी कैन कीप अवे दिस ब्लिस्टर्ड पार्ट और द बर्न पार्ट फ्रॉम द रीच ऑफ द डस्ट, जर्म्स और एनी काइंड ऑफ इंसेक्ट्स, क्योंकि उस पार्ट पे इंसेक्ट्स जो है और जो डस्ट जर्म्स जो है वो बहुत जल्दी आ जाते हैं, जिससे वहां वो वाला पार्ट इन्फेक्टेड हो सकता है, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो उस पार्ट को कवर करके रखना है। लास्ट, व्हाट वी हैव टू डू इन केस ऑफ द केमिकल बर्न्स? केमिकल बर्न्स बेसिकली विच कोज ड्यू टू द यूज ऑफ द केमिकल्स। कई बार हम केमिकल्स वगैरह, एसिड वगैरह यूज कर रहे होते हैं, उससे अगर जलन हो जाए तो, कुछ पार्ट जल जाए तो, यस, यूज प्लेंटी ऑफ वाटर टू वॉश दैट पर्टिकुलर पार्ट, क्योंकि एसिड का जलन जो है वो बहुत जल्दी नहीं जाता है। आपको ठंडा पानी कंटिन्यूसली डालते रहना है, डालते रहना है, डालते रहना है। आफ्टरवर्ड्स यू कैन यूज रेस्ट ऑफ द मेथड्स। अगर वो थोड़ा सा ही पार्ट जला है, देन यू कैन यूज एंटीसेप्टिक क्रीम एंड देन keep it for some time. अगर बहुत ज्यादा जल गया है, then go to the doctor, or if blister has happened, then you can use the antiseptic liquid or cover the part with the cloth. So these kind of treatments you have to take in case of the burns. Next topic is animal bite. So yes, when animal bite to someone like dogs, cats, monkeys, actually their saliva is having some viruses which enters into the body of an organism or animal when they bite. जब ये organism like cat and dog और monkey किसी को काटते हैं, इनके माउथ का जो सलाइवा होता है उसमें एक वायरस होता है, वो वायरस एंटर कर जाता है इनटू अदर पर्सन्स बॉडी, वो दूसरे पर्सन की बॉडी में एंटर कर जाता है, एंड इट कैन कॉज अ डिजीज नोन एज रैबीज। ये रैबीज कर सकता है विच इज वेरी डेंजरस डिजीज। सो इसके प्रिवेंशन के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? इफ डॉग बाइट समवन, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू वॉश दैट पर्टिकुलर एरिया विद द वाटर सो दैट वी कैन कीप अवे द जर्म्स फ्रॉम दैट एरिया। जैसे ही कोई डॉग बाइट कर जाता है किसी भी इंसान को, ह्यूमन बींग को, तो फटाफट से उसको वॉश कर लेना ताकि जर्म्स वगैरह उसके पास ना आ सके। देन अप्लाई द एंटीसेप्टिक क्रीम टू प्रिवेंट इटसेल्फ फ्रॉम द इन्फेक्शन। फिर उसके बाद एंटीसेप्टिक क्रीम को उसके ऊपर लगा लेना है ताकि इन्फेक्शन ना हो उस पर्टिकुलर ह्यूमन बींग को। एंड एट लास्ट गो टू द डॉक्टर टू गेट द एंटी रैबिस इंजेक्शन। अब फटाफट से डॉक्टर के पास जाना है, टेटनस का इंजेक्शन सबसे पहले लगा देते हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो। इट इज लाइक एंटीसेप्टिक इंजेक्शन। उसके बाद डॉक्टर फर्दर मेडिसिन देता है जो एंटी रेबीज इंजेक्शन होते हैं, वैक्सीन होती हैं, जिससे रेबीज होने का खतरा ना हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज not even dog, cat and monkeys can bite a person, can bite a human being. It can also be a snake. स्नेक भी कई बार बाइट कर जाता है ह्यूमन बींग को। तो यस, इन केस ऑफ द स्नेक बाइट व्हाट वी हैव टू डू? स्नेक बाइट के केस में क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगेन क्या होता है कि स्नेक बाइट के अंदर क्या होता है, व्हेन द स्नेक बाइट टू सम पर्सन देन इट इंजेक्ट्स इट्स पॉइजन इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्या करता है, वो अपना जहर उसकी बॉडी में डाल देता है, जिस भी ह्यूमन बींग को वो डंक लगाता है, जिसको भी वो डंक लगाता है उसमें अपना पॉइजन डाल देता है। और ये पॉइजन क्या है, थ्रू द ब्लड स्ट्रीम मूव टूवर्ड्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वो अलग अलग पार्ट में जाता है, हार्ट के पास जाके हार्ट को स्टॉप कर देता है, उसको सर्कुलेट नहीं करने देता ब्लड। ब्रेन पे जाता है, ब्रेन को अफेक्ट करता है, जिससे इंसान कॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है और अल्टीमेटली मर जाता है। सो बेसिकली ये पॉइजन ब्लड के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ट्रेवल करता है। तो आर मेन पर्पज इज व्हाट, हम ये नहीं चाहते कि ये जहर फैले पूरी बॉडी में। तो सबसे पहले हमें वही करना है, क्या करना है, डू नॉट मूव, हमें हिलना ही नहीं है। जितना ज्यादा हिलेंगे वो उतना ज्यादा पॉइजन बॉडी में सर्कुलेट होगा, फैलेगा। जितना ज्यादा हम स्टिल रहेंगे उतना ज्यादा वो एक ही जगह पे रहेगा। देन यूज टाइट बैंडेज। टाइट बैंडेज अगर उस पर्टिकुलर एरिया में डाल दिया तो वहां का ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा, तो वो जो वेनम है, वो जो पॉइजन है, वो उस पर्टिकुलर एरिया में ही रह जाएगा, ठीक है। एंड एट लास्ट गो टू डॉक्टर इमीडिएटली, फटाफट से डॉक्टर के पास जाना है सो दैट ही और शी कैन गिव यू द एंटी वेनम इंजेक्शंस। तो आपको वो जहर से छुटकारा पाने के लिए वो इंजेक्शंस लगाएंगे, एंड जिसकी वजह से आप अपने आप को बचा पाओगे या अपने आसपास वाले जिसको भी स्नेक ने बाइट किया उसको बचा पाओगे। सो दीज काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स वी कैन टेक इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स बाइटिंग। Last topic of this chapter is poisoning.
Like certain things like detergent, naphthalene bowls, some of the medicines are poisonous in nature. So in this case, what we have to do? First of all, we have to keep these kind of things away from the reach of the children. हमें इन्हें ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहाँ पे बच्चे इन तक ना पहुँच पाए, ताकि वो खा ना ले, इनको गिरा ना दे, अपनी बॉडी से ना टच करवा दे. तो इसलिए we have to keep them away from the reach of the children. Next, we have to read the instructions carefully before taking any kind of medicines. हमें कोई भी मेडिसिन लेते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करना होता है कि वो एक्सपायरी तो नहीं है, उस पर एक्सपायरी डेट देखना होता है. नेक्स्ट, जो भी इंस्ट्रक्शंस दी होती है कि हाउ टू टेक दिस मेडिसिन, वी हैव टू फॉलो ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस सो दैट वी कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दिस मेडिसिन, नॉट द डिसएडवांटेज फ्रॉम दिस मेडिसिन. ठीक है. एंड लास्ट वन इज इफ समहाउ एनी ऑफ द चाइल्ड कैन टेक ऑल दीज थिंग्स, कई बार वो ले लेता है, खा लेता है कुछ इस तरह की चीजें, देन फर्स्ट ऑफ ऑल मेक हिम और हर वॉमिट. हमें सबसे पहले अगर किसी बच्चे ने मुंह में डाल ली है, छोटे बच्चे ने इस तरह की चीजें, तो कोशिश करो कि उसको वॉमिट दिलवाओ, ताकि वो वॉमिटिंग के अंदर वो सारी की सारी जो बॉडी के अंदर जा चुकी है चीज वो बॉडी के बाहर आ जाए. एंड कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली सो दैट we can save the child from any of the damage or any of the disadvantage from that particular thing. So beta, this is all about for the reading part of this chapter. Now it's a time for the video. Now I am going to show you one video regarding same, that is first aid. Enjoy the video. As soon as accidents occur, the victim must be given medical aid before a doctor can reach or before the victim can be taken to a hospital. The first help given to the victim is called first aid. Different kinds of injuries need different kinds of first aid. Here are some ways of giving first aid. First aid for wounds. First aid for nosebleeds. First aid for burns. First aid for fracture. First aid for snake bite, and first aid for animal bites. First aid for wounds. Through the wounds or cuts, germs can enter the body. Germs from dirty hands can make the wound worse. So, wash your hands. If the wound is dirty, wash it with boiled and cooled water. Clean the wound with cotton wool. Wash the skin around the wound away from it. Apply tincture of iodine. Bandage the wound with a cotton pad and soft cloth to keep out the dirt. If the wound is deep, it is very important to stop the bleeding. If the blood is dark red and flows evenly, place a hard pad of clean cloth on the wound and bandage tightly. If the blood is bright red and flows in jerks, pressure on the wound can stop the flow. A tight band called tourniquet is twisted around the wound. The bleeding stops because of this pressure. A doctor can tell if an anti-tetanus injection should be given. Tetanus is a deadly disease. Its germs can enter through open cuts or wounds and cause blood poisoning and death. First aid for nosebleeds. When your nose bleeds, you should give yourself first aid. Loosen the clothing around your neck. Sit upright with your head held back and arms folded above the head. Press the bleeding side of your nose firmly with your fingers. Get someone to keep an ice pack or wet cloth on your nose and on the back of your neck. An ice pack is made by keeping ice cubes on a clean handkerchief and folding it into a ball. Breathe through your mouth.
Do not blow your nose for a few hours after the bleeding stops. For heavy bleeding, a doctor's help must be taken. First aid for burns. Accidents with fire are very common, so we should know what first aid is to be given to a patient with burns. Burns can be caused by heat or by chemicals. Minor burns can be treated at home. Applying cold water or ice on the burnt area gives relief from pain. For slight burns, apply a solution of baking soda. When our skin gets severely burnt, blisters are formed. In case of severe burns, make the patient lie down and place a clean piece of cloth over the burnt area to keep out air. Keep the patient's head and chest a little lower than the rest of the body. If he is conscious and can swallow, give him plenty of liquid to drink. And then send the victim to the doctor. In case of chemical burns, wash the area with water immediately. Then cover the burnt area with a clean piece of cloth. Then follow the rest of the treatment as for heat burns. When we have to look after a person with burns, we have to follow 3 rules: prevent shock, prevent infection, and control pain. First aid for fracture. When a person breaks a bone in his body, we call it a fracture. You will know it is a fracture when the victim is in great pain and unable to move the broken limb. The place of injury swells up rapidly. A fractured bone needs proper support to prevent further injury. So, as far as possible, do not move the patient. If the patient has to be moved, first tie a splint above and below the fracture. The splints must be long enough to extend well beyond the joints above and below the fracture. If the bones of the arm are broken, the injured arm should be further supported by a sling. If the leg is broken, it should be tied with splints. The injured leg should not be moved at all. If the patient has to be moved, he should be carried on a stretcher. First aid for snake bite. All snakes are not poisonous. In case a poisonous snake bites a person, it should be treated as a serious emergency and immediate attention should be given to the victim. The snake poison travels very fast through the blood and affects the heart and the nervous system, causing death very quickly. So, get the poison out of the wound of the victim as quickly as possible. This is done by making cross cuts about half a centimeter deep over the wound with a knife and then sucking the wound and spitting out the poison.
This should be repeated a number of times. Apply a tight bandage just above the wound. It prevents the poison-laden blood from reaching the heart. If possible, apply an ice pack over the bite. Wash the wound with potassium permanganate. Then, carry the victim to a doctor. In case of snake bite, do not let the victim walk and do not give alcohol in any form. Do not use wire, rope or twine for bandage. Do not cover the bandage in snake bite. First aid for animal bites. Dogs, wolves, bats, and cats sometimes carry in their bodies the virus of a very dangerous disease called rabies. When such an animal bites someone, the virus enters the victim's body through the animal's saliva. So, first wash the bitten part with soap and running water to wash away the germs. Bandage with a sterile gauze after gently rubbing an antiseptic over the wound, and take the victim to a doctor immediately. I am hoping students you enjoyed the video a lot. So this is all about for this chapter. So your today's work is you have to do the bookwork of this chapter. You have to try to find out the bookwork of the chapter. Tomorrow we will discuss the bookwork of the chapter 3, that is safety and first aid. So this is all about for this chapter and for this video. Thank you.